Good day, folks. Bob, first charan of elections, UP, Western UP over. Ground reality, I'll explain a little bit later. Point to note is the psephologists generally believe that if the voting percentage is below the previous time, the previous elections, and possibility that the incumbent has sneaked through is what the general perception globally is, and also in India. But here they play it depending on which way it pans out. So previously it was 65%, right? So everybody was saying there's got to be Tanke ki chod over 65%. Ended up being below 61%. So at 61. But here's the thing: when you're talking about 61%, before the followers of the Bhagwadhari get too excited, just remember this: what has happened here is that the towns where the danger for BJP lies, the voting percent slipped sharply. And the weighted average of the towns has gone up substantially because of demographic movement towards towns. On the other hand, the number of seats have remained the same, whether it is town or Grameen. In Grameen Kshetras, the percentage of voting has been seriously higher, suggesting change. So what does that tell you? It means the number of seats probably are moving in the wind faster than the BJP thinks they are. So let's not go by a macro figure of vote percentage and it being lower. Here's what the report said. High stake poll contest are 61.6% voter turnout in phase 1. Voting concludes for UP's first phase 61.6. But here's the key. By district, Shamli 69.6, Muzaffarnagar 65.9, Bulandshahr 65.3. And Kairana where was the maximum Dhuvikaran possibility, saw a percentage of 71%. And like I was telling you, this is where the worry for BJP lies. Turnout in GB Nagar, Ghaziabad, bottom of phase 1 pile. And this is what I'm trying to tell you. What has happened, what we're hearing from the ground level is there are a lot of committed BJP voters, because they just couldn't have a heart to vote for anybody else, decided to just not go out. So the hit, folks, may just have been the BJP. And this is going to be a cause of serious worry for them. Because here's what you can remember. Previously, when they talk about 80-20, right? So they're only going after 80. They've dropped the 20% in their own words, right? Previously, they got 60% of this 80% because the voting percentage was 48. Now, hear this, folks. That 80 is way down, if not below 70. Say it's at 70. The 60 now is also way below, say, 50. So these guys are just, no matter what they try, are not going above 35%, folks. And that means a serious hit. A lot of people are saying that Ralda, Sapa are over 32 plus out of 53, out of 58, where previously they only had 3. And BJP had 53 out of the 58. Just remember, the story is critical for you to understand how this voting percentage has worked out. And you heard the tape just above. Cheers. देखिए तमाम ग्राउंड रिपोर्ट्स के बाद जो पिछला अनुभव है करीब 10 सालों का, वो ये मानने को तैयार नहीं हो रहा था दिल कि भारतीय जनता पार्टी को कोई मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है पश्चिम उत्तर प्रदेश के उन जिलों में जहां आज चुनाव हुए हैं। लेकिन जैसा सुबह से रिपोर्ट आनी शुरू हुई, 2-3 चीज़ें बड़ी क्लियर हुई। एक, पश्चिम उत्तर प्रदेश में ध्रुवीकरण का असर कम से कम सतह पर कहीं नजर नहीं आया, चाहे जितनी भी कैराना को, मुजफ्फरनगर के दंगों को। या दूसरी बात यह है कि जो उम्मीद जताई जा रही थी कि अभी भी जाटों का एक बड़ा हिस्सा वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहेगा और थोड़ी बहुत सेंध उसमें लगेगी, लेकिन वो जिस थोड़े बहुत हिस्से की बात कर रहे थे, वो थोड़ा बहुत हिस्सा बहुत बड़े हिस्से में दिखाई पड़ा कि जो समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन के पक्ष में दिखाई पड़ा। और जैसा कि बार बार आपके यहाँ डिबेट में बैठने वाले तमाम लोग कहते रहे हैं कि जाट जो है वो केवल वोटर नहीं है, बल्कि वो इन्फ्लुएंसर भी है, वो असर भी डालता है, वोकल होकर अपनी बातें कहता है, वो देगा। एक नई चीज जो हमारे लोगों ने बताया कि गुर्जरों का जो गुस्सा था, वो गुस्सा केवल फौरी नहीं था या वो कुछ ही समय में गायब हो जाने वाला नहीं था, बल्कि वो गुस्सा आज मतदान के दिन भी दिखाई पड़ा। और किसी बहुत बड़े इशू पर नहीं, किसी उनकी बेरोजगारी समस्या, कंपनसेशन और तमाम सारी चीज़ें जो गुर्जर कम्युनिटी भी हमारे बीच का हिस्सा है, वो भी ये झेलते हैं। लेकिन उनके बीच में गुस्सा था वो उस मेहर भोज वाले इंसिडेंट को लेकर, जहाँ की सम्मान के लिए। उनको जी उन्हें लगा कि उनके नायक के नाम के आगे जो है वो गुर्जर शब्द हटाया गया, और इसको लेकर उन्होंने बड़े बाकायदा खुलकर लोगों के बीच में बात कही। और कुछ ऐसे गुर्जर गुर्जर डोमिनेटेड कॉन्स्टिट्यूंसी थी जहाँ पर तो वो खुलेआम मतदान दफ्तरों के बाहर बोलते पाए गए। तो एक गुर्जर, जाट, मुस्लिम, ये सारा जो कॉम्बिनेशन है, वो कॉम्बिनेशन भारतीय जनता पार्टी का पूरे उत्तर प्रदेश में जो सबसे बड़ा गढ़ है, जिसे किला कह सकते हैं,
किसी भी चुनाव में जिस किले में उनके किसी ने सेंध नहीं लगाई पिछले 9-10 सालों से, वहाँ पर आज जो है वो भारतीय जनता पार्टी को स्टिकी विकेट पे दिखाई पड़ी। इसके उलट जो कुछ भारतीय जनता पार्टी के मजबूत क्षेत्र माने जाते हैं इन्हीं 11 जिलों में, उसमें आगरा है, उसमें मथुरा है, उसमें अलीगढ़ है, उसमें हाथरस है, उन सब जगहों पे भी भारतीय जनता पार्टी कई सीटों पर, मैं नहीं कह सकता हूँ कि सारी सीटों पर उसे कोई बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन बहुत सारी सीटों पर उसे अपने मजबूत गढ़ में भी चुनौती का सामना करना पड़ा है, चाहे वो मथुरा की सीट शहर की हो या फिर गोवर्धन, छाता, इन सब जगह जैसी सीटें हों, या आगरा में ग्रामीण इलाका हो, फतेहाबाद हो, उस तरह के क्षेत्रों में। हाथरस में भी कई बहुत मजबूत लोगों को हमने देखा जो कि अ, कई सारी लहरों में चुनाव आराम से निकाल ले जाते हैं, उनको भी दिक्कत का सामना करते देखा। तो इस तरह से मुझे ये लगता है कि किले में अगर आपको इस कदर चुनौती मिल गई और वहाँ अगर आप के सामने मुश्किलें पेश आई हैं, तो आने वाले जो चरण हैं वो आज के चरण की सीटों के मुकाबले तो पहले से ही मुश्किल पैदा करते ही जा रहे हैं। तो ये स्थिति हमें पश्चिम उत्तर प्रदेश में दिखाई पड़ी, जहाँ अ, जो सबसे जिसे कहते हैं कि सहानुभूत रखते हुए भी अगर भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई आकलन कर रहा है, तो वो इसे 60-40 की लड़ाई बता रहा है, कुछ 50-50 की भी लड़ाई बता रहे हैं। मेरे लिए ये 50-50 की लड़ाई भी लगता है कि गठबंधन जो है सपा रालोद का, उसके लिए राहत भरी बात होती। लेकिन अ, ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे लोग, वो इसे आज इससे भी कहीं आगे बढ़कर बढ़त का मामला बता रहे हैं। जी विनीता जी। और आप हमसे So the ground suggests that their killer has been penetrated. Right, this is a killer. And why do people ask why start in the West when you're going to lose? Because it's like cricket, right? A brave captain, they always say, in England would, especially from India, would bat first, try and put up runs on the board. But hey, when you get all out for 80, then there's hell to pay. That's exactly the attitude here. Okay, this has been shown to them. We've been punched into them. But it just may happen, just like many a time has happened with India. Bats first, thinking like in South Africa. Bat first, thinking, oh, we will show it. We will show a big heart. But the batting collapsed. Absolutely, and we lost the matches, both those matches in South Africa, if you remember it. So what do we have? So the funny thing is, Chanakya has vanished from all this on the day of the election. While the election is being carried on, the Prime Minister's back in play, Yogi's back in play. So everybody's saying why? Because apparently Dhuvikaran has failed, and they just don't want to show Shah's face anymore. Challenging. But hey, opposition losing sleep. Muslim sisters, daughters supporting Modi, says PM. We stand with Muslim women, says PM in UP. Freed Muslim women from triple talaq, says PM. No hijab in schools still matter is resolved, says HC. Now let me just tell you this, folks. The Muslim women may have fallen for all this BS earlier from the Prime Minister. But what they've now seen on the ground, where women from the same religion, which is Hinduism, the Dalits, the way they are treated, they know there's no joy in it for them. This is all just BS as far as the PM is concerned. And from what I've heard, this is the first time, and you'll see the videos, Jat women, no women. And we had this Navlikha Kumar, who is nothing but Godi Media, Times Square, telling us how women have voted more, and that means Prime Minister Modi. That Prime Minister's camp followers of women have disappeared faster than he can say JS. The reason being because of Mehengai, that kids have not gotten jobs, the cylinders cannot be filled, and you can hear at least the Jat ladies. And there's also a Sharma lady who's hiding herself. No, you will hear her very clearly. She's Sharma. And first she says she's with the Bhajpa, then she sneaks out and says there were too many people, I actually voted for Sappa because her daughter-in-law said so. So that's the reality, folks. The women are no longer voting for the BJP in hordes like they did previously. That is trouble. Now what do we have here? Double engine government brought double corruption in UP, says Akhilesh. He's nailed it. And this is funny. Busy campaigning, Jayant fails to vote, BJP slammed it. Does it really matter if he doesn't vote? He's campaigning. One vote ain't going to do nothing, right? And Lakhimpur Minister Teni's son given bail. This, I'm told, is having just the opposite effect and is going to play hell into the next stage, which is the other part of Western UP. Though everybody thinks, oh, this guy's been given is because he's going to spread terror. But it is Tiketh and all are going to go after him, and it's going to be hell to pay for the BJP with this move, even though it's couched in some legal argument here, folks. Cheers. सामने ये पोलिंग बूथ है, यहीं से वोट देकर लोग निकल रहे हैं और उसके बाद मैं इन लोगों से बात कर रहा हूँ. इनको रोकते हैं जो वोट देकर आ रहे हैं. थोड़ा पीछे पीछे टकराओगे यार. कैमरा पर्सन माफ करिए, ये पीछे कैमरा पर्सन देख के चलो. आपने वोट दे दिया दोनों लोगों ने. नाम जान सकता हूँ? अनीता शर्मा. अनीता. तो क्या सोच के अनीता जी ने वोट दिया है आपने? क्या चाहते हो? दिमाग में क्या था? दिमाग में तो सब कुछ यही था भाई, तुम ही जीतो. हैं? तुम ही जीतो और क्या. कौन जीतो? किसकी सरकार चाहते हो आप?
मोदी की मोदी की। चुनाव अभी योगी के लिए हो रहा है कि मोदी के लिए हो रहा है? योगी के लिए। तो क्यों बता दो, थोड़ा इधर आ जाओ, बस है इधर दिक्कत होगी, जरा इधर आइए महिलाओं से जरा समझना चाह रहा हूँ, क्यों जरा बताओ। मतलब योगी को हाँ हाँ यहाँ सब खड़े पास में योगी को देखा है, योगी को ही देखा है। अच्छा। सब खड़े पास में है, इसलिए नहीं बोल रही मैं। अच्छा, नहीं जिसको भी देखे है वो आपकी मर्जी है। आपने क्या सोच के वोट किया है? आप बहू हो इस गांव की बेटी हो? बहू है। क्या सोच के वोट दिया आपने? जो भी सरकार आए बस काम अच्छा करे। तो कौन सरकार चाहते हो आए? मैं चाहती हूँ सपा सरकार। सपा सरकार? हाँ जी। लीजिए, ये कह रहे हैं सपा सरकार, और ये कौन हुई? सपा ही सरकार। सपा सरकार? आप कंफ्यूजन बोलो, पहले तो आप उधर योगी बोल रहे थे, अब सपा बोल। नहीं, योगी ने मतलब सबके सामने तो निकला ओ, जाता। लोग सामने थे इसलिए यहाँ उन्होंने नहीं बोला, वहाँ पे 3-4 लोग खड़े थे नहीं बोला। हाँ? तो ये बहू है आपकी? दिया या वोट देने जा रहे हो? अभी देने जा रहे हैं। चलिए आप लोग वोट देने जाइए, तब बात करेंगे, हालांकि पहले भी बात कर सकते हैं। क्या सोच के वोट देने जा रहे हो? क्या मुद्दा है आपके लिए? लेनो है बस काम बढ़िया होवे, हाँ। तरक्की होवे और बच्चों को काम मिले। कहना का तो कौन ये सब करेगा? जो भी कहना का अच्छा वो होगा, वो सब वोट देंगे और वो करेगा। तो अभी तो योगी जी की सरकार है ना, तो कह रहे हैं काम तो अच्छा हो गया है। नहीं, कोई अच्छा काम नहीं हुआ। अच्छा, ना कुछ नहीं हुआ। कैसे नहीं हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। गांव में जाकर देख लो, कहना सारे को देख लो, कहना कोई काम नहीं करने दे रहा। सारे कामों में कुछ हो रहा, कहाँ हो रहा? अच्छा है गांव में से डांस उठ रही। अच्छा, और आप इनके क्या हो? पोते। अच्छा, पोते इनकी। अच्छा, ये इनके पोते हैं। ये लगता है पर्चा दे रहे हो वोटिंग के लिए। हाँ चलिए। और ये कौन हुई? ये भी दादी है। दादी है। क्या कर रहे हो आप? क्या कर रहे हो? कुछ कर रहे थे आप? मुद्दा क्या है चुनाव का? मुद्दा तरक्की हो, कामयाबी हो, कहना का कि बच्चों को तो काम मिले। देखो गाँव में से डांस उठ रही, बैठ कर देखो। क्या करे? गाँव में बदबू आ रही। अच्छा, एक मिनट 2 महिलाएं और हैं जिनसे नहीं बात की। आपके लिए क्या मुद्दा है? क्या सोच के जा रहे हो वोट देने? वोट दे रहे हैं? क्या सोच के जा रहे हो? काम बढ़िया करेगा। कौन करेगा काम? जो कोई होगा, जो कोई आओगा वही करेगा। हैं? जो कोई आओगा वही करेगा। किसका पता? एक तो है ना अभी योगी जी हैं 5 साल से। योगी जी ने कुछ नहीं करा। कर दिया। हाँ, इनको तो बोलने दो थोड़ा। हाँ, क्या कर दिया योगी ने? नहीं किया। नहीं किया। अच्छा, सौरभ सेहरावत। तो सौरभ क्या सोच के वोट किया है? सोच का तो जी हमने अपने लिए सोच के वोट करा। अपने लिए मतलब युवाओं के लिए सोच के वोट करा। हाँ। किसानों के लिए सोच के वोट करा। हाँ। जो हमारे बड़े हैं, हाँ। अपना खेत को देखते हुए, अपनी रोजगार को देखते हुए वोट करा। हाँ। हमारा जो सरकार है, गठबंधन की सरकार आओगी जी, हाँ। वही हमारे लिए सोच रही। हमारे किसानों के बारे में, हमारी बिजली का बिल हो, हमारी नौकरी का हो, कुछ भी हो, सब तो हमने इसीलिए वोट करा। लेकिन वो तो बीजेपी कहती है, ये सब तो बीजेपी ने कर दिया है। क्या करा बताओ? कुछ भी नहीं करा। हमारे गंडे का पेमेंट है लोग का पिछले साल लगा नहीं आया। अच्छा, बिजली का बिल है जो हमारा 300 का एक था, 2000 का बिल लगा। हाँ। नौकरी कहीं है नहीं। हाँ। आर्मी की भर्ती होली 3 साल होली। एक यूपी पुलिस की करी थी, उसमें भी आधी करी, वो भी विधानसभा का। हाँ। पूरी विधानसभा रंडी। हाँ। जी। अच्छा, आपने दे दिया वोट? आपसे बात हो गई मेरी? नहीं हुई। हाँ? तो ये देखिए उंगली में इनका वोटर का मतदान का लगा हुआ है। क्या सोच के वोट दे के आए हो? चश्मा बिल्कुल नया है, छापा 225 लिखा हुआ है। किसानों के उसमें दिया वोट हमने। योगी जी के लिए? नहीं, योगी जी के बिल्कुल नहीं दिया। किसान का तो भला कर रहे हैं, योगी जी कर रहे हैं। 1.5 लाख गठबंधन की वोट दी, खुल्ला खुल्ला लोग तो नहीं वोट देगा। अच्छा जी, बिल्कुल खुल्ला खुल्ला। लेकिन जाट करें 50-50 है? नहीं, जाट भी नहीं है? So in conclusion, here again we had PM opposition coming up with new ways to stand in way of Muslim women's rights. I think the worry he should also only Muslim women's rights. I'm not worried about. I'm worried about the Dalit women's rights either, and the OBC right. And while the economy, while US inflation surges 7.5% in last 12 months, a 40-year high, which is going to have a serious implication on the Indian economy. What does Sitaraman from JNU say? Economy saw Andakal in UPA era. FM in Parliament debate. But that's all they're about. Andakal, Amrit Kal, Zahirila Kal. I mean, are these guys for real? They're taking us back billions of years because just like Alphonse, he's another bhakt of Achela. Ambani Adani should be worshipped as they create jobs. BJP, nobody should be worshipped, folks, except the God, right? You can't just keep worshipping all these wealth creators like Ambani or that Baba Ramdev. EC changes Manipur poll date to Feb 28th and March 5th. The issue is, this is because done because of Christianity. Why not Goa? Question for you, right? Unemployment down back to pre-COVID levels. Sitaraman counters opposition criticism. Yesterday I showed you the figures being put out by government departments suggest a completely different story. I mean, how blatant can you lie as a minister? Learn it from this sarkar. Learn it from this sarkar. And this is what we have. Charak Shapat may replace Hippocratic oath. Charak Shapat. God. What next, folks? Charak Churan. It's like Charak Churan. That's what this sarkar is going to be remembered for. Jai Hind.